वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई विल टोल यू। मैंने कहा था आप लोगों को कि एक सरप्राइज़ है और हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इस फोटो के ऊपर जो हम पहले ट्यूटोरियल में दिखाएंगे। सो हियर इज सरप्राइज एंड द वर्क दैट वी वर्क ऑन। तो दिस इज द सेम वे दैट आई शो यू how to change a black background. So first we change the black background and then we add the effects. हम पहले बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेंगे, वो सेम मेथड जिसको हम पहले ट्यूटोरियल में दिखाए हैं कैसे करते हैं बैकग्राउंड। जस्ट 5 मिनट्स वो वाला वीडियो है, आई बटन में हम दे देंगे वो वीडियो, और बाद में इफेक्ट्स ऐड करेंगे। तो देखिए, एंड यू वॉच द फुल वीडियो नाउ, देन यू fully understand how to edit photos like that, and you don't need any professional editor. आपको कोई प्रोफेशनल लगेगा नहीं, बिकॉज आप खुद ही कर सकते हो एडिटिंग। तो हम आपको मदद करने के लिए ये चैनल बनाया है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो फुल देखना, ठीक है। And now our picture is fully backgrounded, and now we add the effects. So at first, and we use a brush and layer में जाएंगे, न्यू लेयर लेके हम उसको कलर करेंगे जैसे भी आपको अच्छा कलर लगे वो। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, ब्रश सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम ब्रश करेंगे और एक स्ट्राइक मारेंगे, ओके। एंड you can manage the size or opacity, okay, and drag it and crop it, okay. Before that you go to layer and add 3 dots, and then you go to transform, ठीक है। transform के जाने के बाद इसको crop करके बड़ा कर लेंगे, and हम ऐसे जाके screen कर लेंगे। और फिर हम एक और न्यू एम्प्टी लेयर ले लेंगे और उसमें सेम तरीके से और एक इफेक्ट्स कलर देके हम सेम तरीके से ट्रांसफॉर्म करके वो बड़ा करके हम एडिट करेंगे। अगर ट्रांसफॉर्म एंड क्रॉप इट बिगर, उसको बाहर की तरफ कर गए और थोड़ा साइड कर देंगे, या एंड यू कैन मैनेज हाउ यू वांट टू, ओके। जैसे आपकी मर्जी इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। And now we change the blending mode to screen. You can see the difference, and now we see the difference. Now if you want to decreasing the opacity, you can, and now we same way we can go to overlay
screen or overlay. Alright, you guys go with overlay best way. तो हम जो एफेक्ट्स क्रिएट किए थे तो वहाँ पे जाके हम उस लेयर पे जाके पर्टिकुलर लेयर पे जाके हम उसको मोड को चेंज कर देंगे ये टू ओवरले, नॉर्मल ओवरले। और एक हम अभी और एक एफेक्ट्स मतलब मैं पार्ट फिल यूज़ करना चाहता हूँ, ब्लू कलर यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम एक और एमपीटी लेयर ले लेंगे और दोनों को हम अनसिन कर लेंगे, ठीक है। एंड जैसे दोनों तरीके से हम किए थे वैसे ही सेम तरीके से हम करेंगे ये वाला पार्ट और हम एडजस्ट कर लेंगे अभी, और उसके बाद हम ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके ओवरले कर लेंगे। ओके, एंड नाउ वी चेंज द मोड ओवरले। इफ यू फील वेरी ब्राइट कलर तो अब क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी को थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं तो वो और भी नेचुरल लगेगा। एंड फिर भी एक कलर मिसिंग है, हम और एक एमपीटी लेके हम कलर कर देंगे वो नीचे।